क्रिसमस के मौके पर कैथेड्रल चर्च में दुआया तकरीब का इनेकाद किया गया है। दुआया तकरीब में मसीही बरादरी की बड़ी तादाद शरीक है। बिशप शाहिद महराज ने मुल्की सलामती के लिए दुआ करवाई। Put up with all these circumstances, waiting. Now let's narrow down. Think of Christmas. Now, for how long you have been waiting for Christmas? Can you tell me the time factor? How long you have been waiting for Christmas? It's a very simple calculation. Anybody can calculate. How long you have been waiting? Shabash. 11 months and 24 days. Cash price, 10 rupees after the service. Please come and see. You don't find these luxurious prices on the Christmas day, right? Waiting all those things. But I think during this 11 months and 24 days, there have been changes in your thinking. When it started in March, thinking was different. When it came to July, thinking was different. It was different. Now in December, it is entirely different. But the Word of God says, whatever the circumstances, nevertheless, and I want you to note this word, nevertheless, the darkness will finish, the fear of death will finish, because a son is given to us, and the government shall be upon his shoulder. And who is this son? Wonderful, Counselor, Mighty God, Everlasting, Prince of Peace, and there will be no end to his government. So I want to encourage you this morning that whatever the circumstances are, remember, nevertheless, Jesus is born. Isn't this wonderful? Even from wearing a mask, you can always say, hallelujah, there is no problem. You can always praise God. It is not limited to a section of people there. Nevertheless, Jesus is there. And I want to talk about this morning for a few minutes the reaction of various people who were waiting for this Christmas. Epistle of Peter. Peter is an encouraging epistle. He writes, the birth of Jesus Christ reminds us that it is not a haphazard story. It is not that God saw a dream that Jesus is going to be born and then the birth was there. But it was a long-waited history. Where did it begin? Right in the book of Genesis we find it. When Adam and Eve sinned, they were punished. But God's love was there. Protection was also there. But they had to go out. So remember, love does not mean you don't have to pay the price. Jesus loved the world, but he died on the cross. So this was the promise of God, that he is going to send a Messiah. Salvation will come, redemption will come. And it took more than about 2,000 years in the history. So the plan of salvation was a mystery to the Old Testament prophets. But they still suffered persecution. Problems, difficulties continues. And Peter talks about that the prophets and many people waited for that. But God revealed his Son to you. You heard the gospel. In the Old Testament, God will speak through visions and dreams. But to us he spoke through his own Son. How did he do that? John chapter 1 and verse 14, and he says, and the Word became flesh and beheld his glory as the glory of God, full of truth and love. And this morning, it's a reminder to us. Incarnation flesh, God in us, that's the joy. Sharing his nature with us. God in us. And Peter says, the prophet waited, some of them died for their faith, difficulties, but we have seen his salvation.
The basis of our assurance is Jesus. They went through difficulties and problems, but what happened? We find the work of the Holy Spirit in the birth of Jesus Christ. The prophets prophesied through the Spirit. The Word of God written by the inspiration of the Holy Spirit. The announcement of the birth of Jesus Christ through the Spirit. Angel spoke and he said, Mary, you don't have to be afraid. He will be called the Son of God, the incarnated one. This is the work of the Holy Spirit that you're going to bear a child. And Jesus spoke in the power of the Holy Spirit. Assurance on the basis of the Word of God that I have experienced Jesus. I have seen salvation. Incarnation, God into man. This was the response of Simeon. He was a devoted Christian. He loved God. But remember, We may be very devoted Christian, reading Bible morning, evening, afternoon, maybe going to church, doing all these things, but unless and until we have experience of Jesus in our hands, in our own life, it is not enough. Our religion will not save us. It is Jesus who gives salvation. So Christmas is seeing the salvation. How fortunate we are. The prophets waited for that. But God revealed himself to us. God became. The epistle, Hebrew writer says, God spoke in different ways, but in the last age spoke through us. The express image of his glory. Second thing, Simeon, Isaiah 52:10 says, everyone will see the glory of God. So purpose, knowing Christ in our own life. Second, there was another man. What was his reaction? Luke 19 and verse 3, and he says, Zacchaeus was a man, he wanted to see who Jesus was, but being a short man, he could not because of the crowd. He wanted to see Jesus. Who was this man? A tax collector, not an ordinary tax collector, maybe tax collector commissioner. He had the money, but people were against him. I know people who work in the income tax are not very popular. He was collecting tax undue. But he had a desire, he wanted to see Jesus. Do not judge people from the outside. Inside he had a desire, he wanted to see Jesus. There was many people who wanted to see Jesus. So many people, he was blocked by people, but he always genuinely searched for God. He ran. he just wanted to see Jesus. But Jesus came and stood right there. Jesus is inside our hearts. Many a time we are passing through Difficulties and problems, and we question, where are you, God? You don't realize how I am suffering. Remember, he listens to the voice. Don't get disturbed by losing members, job or other things. God never leaves. He left his throne to be with us. Zacchaeus wanted to see Jesus, but Jesus says, come down. I'm coming to your house for tea. What a wonderful Savior we have. He does things more than we expect or do it. So Zacchaeus' response, what was his response? He said, my life is transformed. If I have taken more than I should have taken, I return 4 times. Christmas reminds us, when Jesus is in your life, what is the response? He said, I give 4 times. Perhaps we have done so many things which are not according to the will of God. When God transformed our life, remember, Jesus don't do just the reformations. He do the regeneration.
And regeneration means if اور anyone is ضروری in عمل Christ, he مانتے ہیں۔ اپنے کرم سے یہ حقیقت ہمارے دل میں مستقل طور پر بٹھا دے، مسیح یسوع کے نام سے آمین۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ ہم خدا کی طرف دھیان لگائیں۔ ہم خداوند اپنے خدا کا شکر کریں۔ یہ واقعی واجب اور نہایت مناسب ہے قدوس باپ کہ ہم ہر وقت اور ہر جگہ تیرا شکر ادا کریں۔ تیرے کلمے کے انسان بننے پر ہمارے دل تیرے نور کی نئی چمک سے منور ہوئے، تاکہ ہم اسے ظاہری صورت میں دیکھ کر خدا جانیں اور عالم غیب کی محبت کی طرف مائل ہوں۔ اس لیے ہم فرشتوں اور آسمان کے تمام باشندوں کے ساتھ یہ کہتے ہوئے look at this women. Jesus spoke to him and she said, yes, I know. When the Messiah will come, he will do all these things. And Jesus said, the one who is speaking to you is the Messiah. She knew about Messiah, but did not experience Messiah. Many of us knows the verses by heart about the birth of Jesus Christ. Many of us know many things about Jesus and his birth. But have you met with this living God? After the resurrection of Jesus, two disciples were going on the road of Emmaus. Jesus was in the center. They were talking, but they never realized who Jesus is because they were overwhelmed by the problems of their life and difficulties. Jesus among us, and sometimes we don't realize. The third reminder of Christmas is, yes, we know about Jesus. John talks in the first chapter, two things: who Jesus is and what he has done. Do you know about Jesus or do you know Jesus? It's two different things. A lot of difference. Somebody has said there's only 18 inches difference between head and heart. And even by so close, you may not be with him, because we may be knowing Jesus had knowledge, but he wants to be transformed from head to the heart. Christmas, waiting long, and here it is. Then Matthew chapter 16, in the Philippi, Jesus said, what do people say about me? He said, some say Elijah, some say John the Baptist, some say the prophet to come. And in the modern world, somebody says, Jesus the magician, he is the healer. But then Jesus says, as people of God, what do you say? And the answer was, Peter said, you are the Son of living God. Jesus is not concerned what do the people say, but the question is, what do you say? Christmas is all about personal relationship with God. It's the restoration of the relationship. What do you say? Who is Jesus to you? Disciples in the boat, storm came. Jesus rebuked wind and everything, and they were astonished and they said, who is this? Even the wind and the storm listened to him. This morning, do you know who Jesus is? The disciples said, yes, we have heard that Jesus is alive, but we don't know where he is. We need to know where he is. That is challenge for us this morning as we celebrate. And then lastly, Jesus does not meet people who are in the Old Testament or who in the New Testament. But he is same yesterday, today and forever. He speaks to the people who are living, who are of this age. And there was a young guy, about 14 years old. He was a man, he was a boy who loved to persecute Christians. He burned the New Testament. But in his heart, he was not at peace. And one night he said, God, if you are there, you revealed yourself to me today. کرسمس پر کیتھیڈرل چرچ میں دعائیہ تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے۔ دوسری جانب سینٹ اینتھنی اور کرائسٹ چرچ میں بھی دعائیہ تقریب کا اہتمام کیا گیا ہے۔ مسیحی برادری کی بڑی تعداد دعائیہ تقاریب میں شریک ہے۔
इसी हवाले से बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है सादिया खान ने। सादिया खान, बताइएगा, मसीही बरादरी की जानिब से आज क्रिसमस का त्यौहार धूमधाम से मनाया जा रहा है, दुआया तकारीब का इनेकाद किया गया है। जी बिल्कुल, हमने देखा है कि दिसंबर के आगाज के साथ ही मसीही बरादरी की जानिब से क्रिसमस की तैयारियां जो है वो शुरू हो जाती हैं। 25 दिसंबर पर खासकर जहाँ पर घरों और गिरजाघरों में इबादत का एहतमाम किया जाता है, वहीं पर केक भी काटे जाते हैं। तो अभी मैं कैथेड्रल चर्च में मौजूद हूँ, जहाँ पर सुबह से ही मसीही बरादरी की आमद का सिलसिला शुरू हो चुका है और वक्फे वक्फे से जो है मुख्तलिफ सेक्शन के साथ जो है वो दुआया तकरीब करवाई जा रही है। तो अभी भी कैथेड्रल चर्च में दुआया तकरीब की गई है, जिसमें मुल्क कौम की सलामती के लिए और नए साल की खुशियों के लिए जो है खुसूसी दुआ करवाई गई है। मसीही बरादरी का ये कहना है कि आज का दिन जो है उनके लिए अमन और भाईचारे का पैगाम देता है। तो हमारा मकसद सिर्फ ये है कि हम मुल्क कौम की सलामती के लिए दुआ करें और नए साल को खुशामदीद करें और अल्लाह ताला जो है वो हमारी आने वाली मुश्किलें जो है वो दूर करे। ठीक है, सादिया खान हमारे साथ मौजूद थी, हमें आगाह कर रही थी, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, शहर भर में क्रिसमस के हवाले से तकरीब जारी हैं। मुख्तलिफ चर्चेज़ में तकरीब के हवाले से जितनी भी मसीही बरादरी है वहाँ पर चर्चेज़ में मौजूद है और अपनी दुआया तकारीब का उनकी जानिब से एहतमाम किया गया है। खुश भी दिखाई दे रही है मसीही बरादरी, और गुज़िश्ता रात से ही और गुज़िश्ता रोज़ से ही शॉपिंग का सिलसिला भी जारी है मसीही बरादरी की जानिब से, और एक दूसरे से मिलने जुलने का सिलसिला भी जारी है। आज क्रिसमस है और मसीही बरादरी की जानिब से क्रिसमस की भरपूर खुशियाँ मनाई जा रही हैं, एक दूसरे को मुबारकबाद दी जा रही है। जबकि लाहौर के मुख्तलिफ चर्चेज़ में क्रिसमस के हवाले से तकरीब भी जारी हैं, दुआया तकरीब का एहतमाम भी किया गया है और एक दूसरे को मिठाइयाँ भी दी जा रही हैं। मनाजिर भी अपनी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। कैथेड्रल चर्च के एक तरफ मनाजिर हैं जहाँ पर तकरीब का इनेकाद किया गया है, जबकि दूसरी तरफ क्राइस्ट चर्च के भी मनाजिर अपनी स्क्रीन पर आप मुलाहिजा कर सकते हैं। सेंट एंथनी चर्च में भी तकरीब का एहतमाम किया गया है और सेंट एंथनी के मनाजिर भी अपनी स्क्रीन पर आप मुलाहिजा कर सकते हैं। शहर भर में क्रिसमस के हवाले से तकारीब का इनेकाद किया गया है, जबकि सजाया गया है मुख्तलिफ गली मोहल्लों को, जहाँ पर मसीही बरादरी अपने इस त्यौहार को जोश व खरोश से और खुशी के साथ मना रही है। जी हाँ, मसीही बरादरी की जानिब से क्रिसमस की खुशियों को भरपूर अंदाज से मनाया जा रहा है, इंजॉय किया जा रहा है, दुआया तकरीब का इनेकाद किया जा रहा है मसीही बरादरी की जानिब से। शहर लाहौर के मुख्तलिफ चर्चेज़ में इस हवाले से दुआया तकारीब सजाई गई हैं और मसीही बरादरी की एक बड़ी तादाद भी इन दुआया तकारीब में देखी जा सकती है। लोग सुबह सवेरे ही चर्चेज़ में पहुँच चुके हैं और भरपूर अंदाज से जो है इस त्यौहार को मनाया जा रहा है। मिठाइयाँ तकसीम की जा रही हैं, केक काटे के जा रही हैं। तफसीलात जानेंगे उस्मान अलीम से। उस्मान, आप किस जगह पर मौजूद हैं और वहां पर किस अंदाज से क्रिसमस की खुशियों को मनाया जा रहा है? दुनिया भर में क्रिसमस की खुशियां जो है वो मसीही बरादरी की जानिब से मनाई जा रही हैं और मैं इस वक्त योहानाबाद क्राइस्ट चर्च में मौजूद हूँ, जहाँ पर क्रिसमस के हवाले से दुआया तकरीब का एहतमाम जो है वो किया गया है और तकरीब में मसीही बरादरी की बड़ी तादाद जो है वो शरीक है। यहाँ पर पास्टर इरशाद अशकनाज जो है वो दुआ करा रहे हैं, जिसमें मजहबी बरादरी के जो मजहबी गीत हैं और दुआया तकरीब है उसका सिलसिला जारी है। यहाँ पर बड़ी तादाद में जो मसीही बरादरी है वो आ रही है, मिठाइयाँ भी बांटी जा रही हैं, केक भी काटे जा रहे हैं, जबकि इसके साथ ही साथ जो मजहबी गीत है वो भी गाए जा रहे हैं। यहाँ पर बड़ी तादाद इस वक्त जो मसीही बरादरी की मौजूद है और आज अपने क्रिसमस के दिन के हवाले से जो है वो खुश दिखाई देती है। योहानाबाद चर्च में पास्टर अरशाद अशकनाज ने मुल्क की तरक्की और सलामती के लिए जो है वो भी दुआएं कराई, जबकि आज यहाँ पर दुआ के और इबादत के 2 सेशन जो हैं वो मुनक्किद करवाए जाएंगे, जिसमें पहले सेशन का आगाज जो है वो हो चुका है और पहला सेशन 10 बजे तक जारी रहेगा, जबकि दूसरा सेशन 10:30 बजे शुरू होगा जो कि 1 बजे तक जारी रहेगा। जी ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें तफसील लगा किया, हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। हमें ज्वाइन किया है साउथ बर्ट ने, जो कि मौजूद हैं सेंट एंथनी चर्च के बाहर। बट साहब बताइएगा, वहाँ पर किस तरह से मसीही बरादरी इस क्रिसमस के त्यौहार को मना रही है, खुशियों का इजहार किया जा रहा है, एक दूसरे में मिठाइयाँ तकसीम की जा रही हैं? आज बिल्कुल सेंट एंथनी चर्च के अंदर भी जो क्रिसमस के हवाले से तकरीबात है उसका बाकायदा तौर पर आगाज कर दिया गया है। तकरीब में मसीही बिरादरी की एक बड़ी तादाद जो है वो सुबह से शरीक हो रही है। सुबह 8 बजे से लेकर 9 बजे तक पहला सेशन जो अंग्रेजी जबान में किया गया था, उसमें पाकिस्तान समेत बैरून ममालिक से, फिलीपीन से, मलेशिया से, साउथ अफ्रीका से लोगों ने इसमें शिरकत की। फादर वॉन की जानिब से बाकायदा तौर पर सुबह अंग्रेजी ज़बान में पाकिस्तान की और दुनिया की सलामती के लिए दुआएं करवाई गई। इस वक्त दूसरा सेशन जो है बाकायदा तौर पर शुरू कर दिया गया है, जिसकी जो सदारत है वो पादरी मुश्ताक कर रहे हैं और उनकी जानिब से भी दुआया तकरीबात का जो सिलसिला है वो जारी है। मजहबी गीत गाए जा रहे हैं, पाकिस्तान की सलामती के लिए दुआ की जा रही है और ख़ास तौर पर ये दुआ की जा रही है कि कोरोना की वबा से पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया को
جلد از جلد چھٹکارا ملے. اس حوالے سے جو مین سڑک ہے ریگل چوک سے جو لنک روڈ آ رہا ہے اس کو مکمل طور پر بند کیا گیا ہے اور پولیس کی بھاری نفری تعینات ہے. ہر بندے کو باقاعدہ طور پر چیک کے اندر آنے دیا جا رہا ہے اور انسداد کورونا کے حوالے سے جو SOPs ہیں ان کو فالو کرنے کے حوالے سے بھی تمام تر اقدامات یہاں پر کیے جا رہے ہیں. تمام تر اقدامات کیے گئے ہیں. سیکیورٹی کے بھی فل پروف انتظام ہے تاکہ مسیحی بہن بھائی اپنی خوشیوں کو بھرپور انداز سے انجوائے کر سکیں. ساؤتھ بٹ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے, بہت شکریہ آپ کا. شہر بھر میں کرسمس کی تقریب کا اہتمام کیا گیا ہے جبکہ مسیحی برادری کی جانب سے خوشی کا اظہار کیا جا رہا ہے, ایک دوسرے سے ملا جا رہا ہے, مٹھائیاں تقسیم کی جا رہی ہیں, ایک دوسرے کے گھر پر جا کر مبارکباد دی جا رہی ہے. مناظر اپنی اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مٹھائیاں جو ہیں وہ تقسیم کرنے کا سلسلہ بھی جاری ہے جبکہ گزشتہ روز سے ہی جو شاپنگ ہے کرسمس کی وہ کی جا رہی تھی. مسیحی برادری کی جانب سے اسپیشل بازار لگائے گئے تاکہ مسیحی برادری جو ہے اپنی شاپنگ کر سکے کرسمس کی, اور وہاں پر انتہائی اس سہولت کو بھی سراہا گیا کرسمس کے حوالے سے مسیحی برادری کی جانب سے. شہر بھر میں چراغاں بھی کیا گیا ہے, مختلف علاقوں میں چراغاں کیا گیا ہے کرسمس کی تقریب کے حوالے سے, اور کرسمس کی خوشیوں کو دوبالا کرنے کے لیے چوڑیوں کے سٹالز پر بھی مسیحی برادری کی جانب سے رش دکھائی دیا اور چوڑیاں خریدی جا رہی ہیں, ملبوسات خریدے جا رہے ہیں اور کرسمس کے حوالے سے خوشی کا اظہار کرنے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ مٹھائیوں کا تبادلہ بھی کیا جا رہا ہے اور دوسروں کے گھروں میں جا کر مبارکباد دی جا رہی ہے کرسمس کی. جی بالکل, کرسمس کو بھرپور انداز سے منایا جا رہا ہے, کیک کاٹے جا رہی ہیں, مٹھائیاں تقسیم کی جا رہی ہیں, بھرپور انداز سے شاپنگ کی جا رہی ہے مسیحی برادری کی جانب سے, اور اس موقع پر ایک دوسرے کو تحائف دینے کا سلسلہ بھی جو ہے وہ جاری رہتا ہے تاکہ دوسروں کو بھی اپنی خوشیوں میں شامل کیا جا سکے. اس حوالے سے مسیحی برادری بھی خاص جوش و خروش کے ساتھ اس دن کو منا رہی ہے, اس تہوار کو منا رہی ہے, اور چرچ کے ہی مناظر آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں جہاں پر جو ہے دعائیہ تقریب کا اہتمام کیا گیا تھا اور اب مسیحی برادری میں مٹھائی بھی تقسیم کی جا رہی ہے. آج صبح سے ہی دعائیہ تقاریب کا سلسلہ جاری ہے. اس موقع پر ضلع انتظامیہ کی جانب سے بھی سیکیورٹی کے فل پروف انتظام کیے گئے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ مسیحی بہن بھائیوں کو یہ تلقین بھی کی جا رہی ہے کہ تہوار منایا جائے, خوشیاں منائی جائیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ کرونا SOPs کا بھی خیال رکھا جائے, انہیں بھی ملحوظ خاطر رکھا جائے کیونکہ کرونا وبا سے بھی نمٹنا ہے. لہٰذا دعاؤں میں بھی مسیحی برادری کی جانب سے کرونا وبا سے نجات کے لیے خصوصی طور پر دعائیں کی جا رہی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ چرچز میں ملک و قوم کی سلامتی اور نئے سال کی خوشیوں کے حوالے سے بھی دعائیہ تقاریب کا اہتمام کیا جا رہا ہے اور یہ دعا کی جا رہی ہے کہ نیا سال نہ صرف مسیحی برادری پاکستان بلکہ پوری دنیا کے لیے سلامتی اور خوشحالی کا سال ہو, استحکام کا سال ہو, اور اس آنے والے سال میں ہمیں کرونا وبا سے بھی نجات مل سکے. لہٰذا اس حوالے سے بھی خصوصی طور پر دعائیں مانگی جا رہی ہیں. گرجا گھروں کو برقی کمکموں سے سجایا گیا ہے. مسیحی برادری نے گلی محلوں اور اپنے گھروں کو بھی خوبصورت انداز سے سجایا. اس موقع پر سینٹا کلوز کہیں پہنچ چکا ہے تو کہیں برقی کمکموں سے کرسمس ٹری کو خاص طور پر سجایا جاتا ہے اور ایک دوسرے کو تحائف دینے کا سلسلہ جو ہے وہ بھی جاری رہتا ہے. اور ان دعائیہ تقاریب کے بعد مسیحی بہن بھائی ایک دوسرے کے گھروں میں جاتے ہیں, کیک کاٹے جاتے ہیں اور اپنی خوشیوں کو دوبالا کیا جاتا ہے. جی بالکل, اور جس طرح سے کہا جاتا ہے کہ جتنی بھی عیدیں ہوتی ہیں وہ بچوں کی ہوتی ہے, تو اسی طرح سے بچوں مسیحی برادری کے بچوں کے لیے بھی یہ ایک عید ہے اور عید پہ بچے زیادہ خوش دکھائی دیتے ہیں کیونکہ ان کو تحائف دیے جاتے ہیں ان کے بڑوں کی جانب سے, اور سینٹا کلوز کی صورت میں ان کے بڑے جو ہیں وہ ان میں تحائف تقسیم کرتے ہیں. فیملی گیدرنگز کا اہتمام کیا جاتا ہے, تمام جو رنجشیں ان کو بھلا کر لوگ ایک ساتھ بیٹھتے ہیں اور خوشی مناتے ہیں. مسیحی برادری میں اس وقت خوشی اور جوش و ولولہ پایا جا رہا ہے. کرسمس کے حوالے سے شاپنگز بھی کی جا رہی ہیں اور مٹھائیاں بھی تقسیم کی جا رہی ہیں, جبکہ دوسروں کے گھر جا کر وہاں پر کیک لے جایا جاتا ہے, کرسمس کی مبارکباد دی جاتی ہے. اور مختلف چرچز ہیں جہاں پر دعائیہ تقاریب کا اہتمام کیا گیا ہے اور دعائیہ تقاریب کے بعد تمام تر جو حاضرین ہیں ان میں مٹھائیاں بھی تقسیم کی جا رہی ہیں اور اس حوالے سے ایک دوسرے کو مبارکباد بھی دی جا رہی ہے. مختلف چرچز کے مناظر اپنی اسکرینز پر آپ دیکھ سکتے ہیں. سینٹ اینتھنی چرچ کے مناظر پہ اپنی اسکرینز پر آپ دیکھ سکتے ہیں, جبکہ کرائسٹ چرچ کے مناظر پہ اپنی اسکرینز پر دیکھ سکتے ہیں. دوسری طرف کیتھیڈرل چرچ کے مناظر بھی اپنی اسکرینز پر آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں. اور پھر سے بات کریں گے کرسمس کی تقریب کے حوالے سے. کرسمس پر کیتھیڈرل چرچ میں دعائیہ تقریب کا اہتمام کیا گیا ہے. دعائیہ تقریب میں مسیحی برادری کی بڑی تعداد شریک ہے. بشپ شاہد معراج نے ملکی سلامتی کے لیے دعا بھی کروائی ہے. اس وقت بھی دعائیہ تقریب کا سلسلہ جاری ہے. شہر بھر میں کرسمس تقریب کا اہتمام کیا گیا ہے اور اس حوالے سے آپ کو بتائیں کہ سینٹا کلوزز جو ہیں وہ بچوں کو خوش کرنے میں مصروف ہیں. شاپنگ بھی کی جا رہی ہے کرسمس برادری کی جانب سے, مٹھائیاں تقسیم کرنے کا سلسلہ بھی جاری ہے, خوشیاں بانٹی جا رہی ہیں, ملک و قوم کی سلامتی کے لیے دعا کی جا رہی ہے, کرونا وائرس کے خاتمے کے لیے دعا کی جا رہی ہے. اور اس حوالے سے
जितनी भी मसीही बरादरी है उसमें खुशी पाई जाती है। गुज़िश्ता रोज़ सिटी न्यूज़ नेटवर्क में भी क्रिसमस की तकरीब का इनेकाद किया गया और जितनी भी मसीही बरादरी है उनमें इनामात भी तकसीम किए गए और उनकी खुशियों में शामिल हुआ गया। आपको बताते चलें कि तोहफ़े भी तकसीम किए गए हमारे मुख्तलिफ जो मसीही एम्प्लॉयज़ हैं। और इस हवाले से आपको बताएं कि शहर भर में क्रिसमस की तकारीब का एहतमाम किया गया है और दुआया तकारीबी का एहतमाम किया गया है मुख्तलिफ चर्चेज़ में, जिसमें सेंट एंथनी, और इस हवाले से आपको बताएं कि क्राइस्ट चर्च, कैथेड्रल चर्च में भी दुआया तकरीब का एहतमाम किया गया है। बच्चे भी खुश दिखाई दे रहे हैं। बड़ों की जानिब से तोहफ़ देने का सिलसिला जारी है बच्चों को, और बच्चों की आज ईद है। जिस तरह हर ईद बच्चों की होती है, ये क्रिसमस भी बच्चों की क्रिसमस है और सेंटा क्लॉज का इंतज़ार होता है बच्चों को और उनसे तोहफ़ लेके बच्चे खुश होते हैं और बड़ों के साथ इस क्रिसमस की खुशी को मनाते हैं। जी बिल्कुल, मॉल रोड, इसके साथ साथ यूहन्नाबाद सेंट एंथनी चर्च में भी दुआया तकारीब का सिलसिला आज सुबह से ही शुरू हो चुका है। दुआया तकारीब जो है मुख्तलिफ चर्चेज में इस वक्त जारी है। मिठाइयाँ तकसीम की जा रही हैं, केक काटा जा रहा है। मसीह बरादरी भरपूर अंदाज से इस त्यौहार को मना रही है। घरों को सजाया जा रहा है, अपने गली मोहल्लों को सजाया जा रहा है और इसके साथ साथ जो है खुसूसी तौर पर इस मौके पर क्रिसमस ट्री हर घर में मौजूद होता है और मसीह बरादरी की जानिब से उसको उस ट्री को भरपूर अंदाज से बत्ती कुमकुमों से सजाया जाता है। एक दूसरे को तोहफे तोहफ़ दिए जाते हैं और बच्चों को इस मौके पर ईदी भी मिलती है। और सेंटा क्लॉज का भी, जैसे कि तंसीर बता रहे थे, हर बच्चे को इंतजार होता है कि सेंटा क्लॉज कब आएगा और इसको कब तोहफे तोहफ़ मिलेंगे। गुज़श्ता रोज सिटी न्यूज़ नेटवर्क में भी इसी तरह एक सेंटा क्लॉज आ गया और तमाम मसीही बरादरी को जो है वो तोहफे तोहफ़ दिए गए और उनमें जो है तोहफ़ तकसीम किए गए सिटी न्यूज़ नेटवर्क की जानिब से। Let us say together, accept, O God, these prayers and praises for the sake of your Son, our Savior Jesus Christ. Amen. Shall we sing another hymn, hymn number 20? And before we sing that, we must thank Christmas Father, that from last more than 20 years, and you all now familiar with the Christmas Father, Mr. Sadok Wasim Shah. And of course, when we have our Sunday school children, and now he's a very popular in Lahore, in the community of Lahore. Whenever people need Christmas Father, they call us, send that beautiful Christmas Father. And this year he was not well even, but he performed his duties. So we're thankful to God for all his contribution, and of course,